Assalamu alaikum, dear students. This is unit number 5 of English 1, and this is part 1 of unit 5. And in this section, we are going to discuss three things. We will discuss expressing certainty, we will discuss expressing uncertainty, and we are also going to have a look at expressing obligation. ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं. सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी तो इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनको हम साथ साथ लेकर चलेंगे. तो आखिरी पोर्शन जो होगा उसमें हम ऑब्लिगेशन को देखेंगे कि ऑब्लिगेशन होती क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि अगर आप कोई प्लान डिवाइस करते हैं कहीं पे जाने का, लेट्स सपोज कि यू डिसाइड कि भाई हम मर ही जाएंगे. ठीक है, अब आपके ज़हन में प्लान है लेकिन आप अकेले तो नहीं जा सकते, इसमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे. ऑब्वियसली यू विल नीड मनी, you will need arrangement of the transport. Furthermore, it will also depend upon the availability of your friends, and there is also always a chance of emergency as well ना. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं अपने प्लान के बारे में, ठीक है, तो वो सर्टेनिटी से लेके अनसर्टेनिटी के बीच में हैंग करती रहती हैं. ठीक है, कि जब आप श्योर होते हैं, 100% श्योर होते हैं कि आपने कहीं पे जाना है, ठीक है, तो उसमें एब्सोलूट सर्टेनिटी के एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज़ होते हैं. और जब आपको श्योर नहीं होता, 50-50 होता है, तो उसमें सर्टन टू अनसर्टन वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, जिनको हम आगे जाके लेक्चर में देखेंगे कि वो एक्सप्रेशंस हैं कौन से, आप उनको यूटिलाइज करते हैं. और जब आपको लगता है कि जो हमारा प्लान है, व्हेन यू आर श्योर, जब आपकी फीलिंग्स हैं कि जो आपका प्लान है वो कामयाब होगा या नहीं होगा, वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है, ठीक है, तो वो फिर आपकी फीलिंग्स जो हैं वो लोअर सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी की जानिब मूव कर जाती हैं. ठीक है, तो सर्टेनिटी वो सिचुएशन के जिसमें आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होते हैं, जहां आपको कोई डाउट नहीं होता किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी आइडिया के बारे में या फिर किसी प्लान के बारे में. तो ऐसी सिचुएशन को सर्टेनिटी कहा जाता है. और अनसर्टेनिटी ऑन द अदर हैंड इज समथिंग or a situation in which you are undecided or you have absolutely no idea whether it is going to happen or it is not going to happen. ठीक है, okay, now in order to develop the understanding of this concept of certainty and uncertainty, please let us read a dialogue that has been given to you. So there is an interview going on between an interviewer and the Minister of Finance of Pakistan. Okay, Mr. Minister, he says, how would you comment on this year's budget? Well, the minister says, well, of course, I have all the positive comments to make. Well, of course, of course itself जो है वो certainty का expression है. I will say with certainty that overall this budget is positive, export oriented and business friendly. ठीक है, अब I will say with certainty, expression of certainty, I am absolutely sure, again this is an expression of expressing certainty, that this budget has been welcomed by all communities, especially the business community, who has termed it as an investor friendly budget. Above all, the most satisfying point is that this, whatever recommendations we have uh, given, have been approved 100%. Interviewer says, can you highlight some of the prominent features of the budget? Minister says, it's definitely a people friendly budget. डेफिनेटली का जो वर्ड है ये एब्सोलूट सर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे. ठीक है, दैट विल श्योरली गिव अ बूस्ट टू नेशनल इकोनॉमी. दैट विल श्योरली गिव अ बूस्ट. श्योरली का वर्ड अगेन एब्सोलूट सर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज सर्टनली वेरी गुड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. Certainly very good, again expression of certainty. And it is especially good for textile industry. Especially good, again it is an expression of expressing certainty. This year's budget clearly indicates a cut in taxes, an unquestionable record increase in development. So I say this with confidence that we will for sure achieve
targeted GDP growth of 6 to 8%. ठीक है, we will for sure. Again, this is an expression of expressing certainty. Okay, now the expressions of certainty, they have been isolated and you can see them on your screen, that these expressions in this dialogue, these expressions, they have been used to express certainty of certain degree. Okay, first of all, the first expression we came across was, well, of course. I will say this with certainty, I am absolutely sure it has an absolute success, have been 100% approved, it's definitely a people friendly budget, will surely give a boost to national economy. It's certainly very good from the agricultural point of view. It is especially good for textile industry. This year's budget clearly indicates a cut in taxes. सारे expressions जो हैं ये certainty को reflect करते हैं. An unquestionable record increase in development. Again, expression of certainty, and I say this with confidence that we will for sure achieve a targeted GDP growth of 6 to 8%. Again, this is an expression of expressing certainty. ठीक है. अच्छा, अब ये सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम उर्दू की बात करें, ठीक है, उर्दू में हम बात करते हैं कि आज तो मैं लाजमी पार्क जाऊंगा, और एक और बात है कि हो सकता है कि आज मैं पार्क जाऊं. ठीक है, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं आज पार्क जाऊं. अब ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं हमने सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए, लेकिन उनमें जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है या जो अंदाज है या जो उसका मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है. जब मैंने ये कहा कि भाई मैं यकीनन पार्क जाऊंगा, इसका मतलब है कि आई एम 100% श्योर. हो सकता है कि मैं आज पार्क जाऊं 50-50. ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आज मैं पार्क जाऊंगा. ठीक है, तो इट इज़ 10% चांस. ठीक है, 10% चांस है कि मैं जाऊँ. तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर we use certain expressions के that reflect various या फिर certain degree of certainty. For example, पहला expression जो आपके सामने है, it is definitely going to rain. It reflects that we are saying this with utmost surety and without any doubt that it is going to rain. But if we say that it might rain, it means that we have mixed feeling, we are not sure. We have certain feelings of certainty and as well as certain feelings of uncertainty mixed. So there is a doubt as well, and it is 50-50 chance. Now you can see various expressions written on your screen. These expressions, they are used to express various degrees of certainty. Okay, first of all, if we look at the first expression, it's definitely going to rain. It means that there is 100% certainty of raining. Okay, the second expression is, look, it's going to rain. It means that it is the 90% chance or 95% certainty is there, it will surely rain this afternoon. Again, higher chances higher chances of certainty are there in this third sentence. Sentence number 4, I think it will rain. Now the chances of certainty, they have been reduced. Okay, now the chances of certainty, they are reduced and it is like 60 to 70% chance. I don't think it will rain. Now the chances of certainty, they are further reduced to 40%. It will probably or may or might rain 30%, 40%. It probably won't या may might rain 20% पे आ गया. It definitely won't rain. So 0%. ठीक है, तो अब ये वेरियस एक्सप्रेशंस हैं जो कि सर्टन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, फ्रॉम 100% टू 0%. जहाँ पे डाउट आ जाएगा वहाँ पे तो फिर ऑब्वियसली 0% हो गया ना. ठीक है, so here are certain expressions that can be used to give complete degree of certainty, strong degree of certainty, and less strong or very little degree of certainty. Okay, for complete degree of certainty we use
certainly, definitely, clearly, undoubtedly, ठीक है. To express strong degree of certainty we use probably and presumably, ठीक है. To express less strong degree of certainty we use likely or unlikely, possibly नॉट और परहैप्स नॉट, ठीक है. परहैप्स नॉट, पॉसिबली नॉट और अनलाइकली जो है ये तो डाउट में आ जाता है ना, ठीक है. लाइकली का जब वर्ड आता है तो इट मीन्स कि इट इज़ 10 to 20% चांस, ठीक है. तो यू नीड टू कीप दिस चार्ट इन माइंड कि कंप्लीट डिग्री के लिए सर्टनली, डेफिनेटली, क्लियरली, अनडाउटली, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि 50, 60, 70% चांसेस के लिए प्रोबेबली, प्रिज्यूमेबली, और उससे नीचे लाइकली, और फिर जब ज़ीरो पे आ जाए तो अनलाइकली, पॉसिबली नॉट और परहैप्स नॉट, ठीक है. तो सेंटेंसेस अब आपके सामने हैं, ठीक है. इसमें इनको आपने रीडिंग देनी है और यहाँ से डिसाइड करना है कि कौन सी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी जो है वो यूज़ की गई है. इफ़ यू रीड फर्स्ट सेंटेंस, इट प्रोबेबली, इट विल प्रोबेबली नेवर बी नोन व्हेन ही बिगिन राइटिंग पोइट्री. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी जो है, इट विल प्रोबेबली नेवर बी नोन, वो रिफ्लेक्ट की गई है, ठीक है. चूंकि विल भी लग गया है और नेवर भी नोन लग गया है, ठीक है. द आंसर ऑलमोस्ट सर्टनली अगेन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ही हैज प्रिज्यूमेबली, ठीक है, प्रिज्यूमेबली जो है स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. और देयर इज परहैप्स अगेन जो है इट रिफ्लेक्ट्स. तो परहैप्स जो है वो अगेन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. इट इज पॉसिबल दैट माई ग्रैंड फादर विल कम टू स्टे. अब वर्ड अगर पॉसिबल का, मुमकिन है, तो ये लेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. शी इज डेफिनेटली, डेफिनेटली का वर्ड आ गया तो इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट सर्टेनिटी. दे सर्टनली डोंट नीड टू माइग्रेट टू अमेरिका. सर्टनली तो कंप्लीट सर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है. दे द अराइवल ऑफ द फ्लाइट इज लाइकली टू बी डिलेड. लाइकली का मतलब अगेन लेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है. दे आर अनडाउटली गोइंग टू गेट मैरिड दिस समर. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. देयर इज अ पॉसिबल इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है. लेस स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग, इसके बीच में ये पॉसिबिलिटी जो है वो है, ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली. अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, ठीक है. अनसर्टेनिटी को किन एक्सप्रेशंस की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है. तो देर इज अ डायलॉग और देर इज एन इंटरव्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, Ahmed Ali, who is expressing his doubts and concerns over the budget issue, ठीक है. तो around a third of Pakistan's 150 million people still live in poverty, and the middle and the poorer classes have been hit by accelerating inflation. I doubt, सबसे पहला expression आ गया I doubt, if this budget is addressing these two basic issues, poverty and inflation. The budget contains incentives for the rich, for the business class, but I would be surprised if there is much for common man. I would be surprised if there is, ठीक है. तो ये expression of uncertainty है. I don't suppose is again an expression of uncertainty that this budget is going to bring any relief for an ordinary Pakistani citizen. There is no way again it expresses extreme uncertainty that this middle and poorer classes will ever live comfortably. I don't think there is anything beneficial for the poor. I don't think, again, it expresses uncertainty. It is unlikely is again an expression of uncertainty, ठीक है. फर्दर मोर, ठीक है. तो ये सारे एक्सप्रेशन से अनसर्टेनिटी के जिनको आपने देखा. Okay, so now move on. Read the following sentences and identify the words that express certainty. ठीक है. तो this is an activity for you for identification of the expressions that can be used to express certainty. In fact, the first of all, in fact itself is expression of certainty. Without doubt, without doubt is again an expression of certainty. You can be sure, you can be sure is expression of certainty.
Surely is expression of certainty. There is definite shift. There is definite जो है ये expression है certainty का, ठीक है। अब हम बात करते हैं obligations की। obligations क्या होती हैं? The act of binding oneself by social, legal और moral tie। कि आप ये कहते हैं कि ये मेरा इखलाकी फरीज़ा है, जैसे सफाई का ख्याल रखना हमारा मुशर्ती और इखलाकी फरीज़ा है, ठीक है। सिग्नल ना तोड़ना ये हमारा लीगल कानूनी फरीज़ा है, ठीक है। अब इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेशंस, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें कि जो कि हमारे फ़राइज़ की सेंस में आता है, ठीक है। समाजी फ़राइज़, कानूनी फ़राइज़ या फिर इखलाकी फ़राइज़, ठीक है। A social, legal or moral requirement such as duty, contract or promise that compels one to follow or avoid a particular course of action। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि यार ये ऐसा करना हमारी रवायात में नहीं है, ठीक है। अभी जो रवायात में नहीं है, ये रवायात जो है ये ऑब्लिगेशंस, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जो कि आपके ऊपर हैं और आपको वो ऐसा काम करने से मना करती हैं, ठीक है। तो अब course of action imposed by society, law, or conscience by which one is bound or restricted। कि ऐसी रुकावटें कि जो कि इम्पोज करता है हमारे ऊपर, लागू करता है हमारा मुआशरा, हमारा कानून या फिर हमारा ज़मीर, कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस शख्स को वोट दूँ ना, ठीक है। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हम ऑब्लिगेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए चंद वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कमिटमेंट, ड्यूटी, नीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स that are used to express obligations। अब हम चंद expressions पढ़ लेते हैं that can be used to express the obligations। The first sentence is a good citizenship means fulfilling the duties or obligations that are imposed by the law of the land, ठीक है। Good citizens must abide by, अब abide by का जो word है ये phrase है, सॉरी, ये expression है obligation का, ठीक है। abide by, live and act, abide by, live and act according to the laws and customs of the country। ये पूरा expression जो है according to तक ये expression है obligation का, ठीक है। as good citizen we must recognize our moral obligations, duties and responsibilities, ठीक है। we need to display a certain level of sincerity and integrity in whatever we do in order to live in harmony with other people in society। We need to display certain level of sincerity and integrity। This is an expression of expressing obligation। sense of duty means understanding your responsibility। ये सारा expression जो है ये obligation को express कर रहा है, ठीक है। The individual sense of duty converts into a collective sense of duty। अगेन जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऑब्लिगेशन के हैं। एज पीपल वी शुड nurture honesty, integrity, because these qualities make us a good citizen in real sense, okay। A strong sense of duty and personal commitment are two basic qualities that we lead to character building, ठीक है। तो ये सब एक्सप्रेशन से ऑब्लिगेशन के उम्मीद है आपको जो है वो पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और जो मॉरल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन और सोशल ऑब्लिगेशंस हैं इनकी समझ आ गई होगी कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए अपने टेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।